हेलो एंड वेलकम एवरीवन एंड जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग सेफ्टी शॉट्स जो छोटे छोटे वीडियोस हैं गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स ऑन सेफ्टी हम लोगों का जो सेशन दैट इज गोइंग ऑन इज ऑन रूल्स ऑफ सेफ्टी एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट golden rule number 3, and that is about safety in confined space. Now, why these are rules? See, basically, one gentleman just messaged me, sir, these are golden rules, but golden rules, what we are being taught is very different. Yes. So basically, what are golden rules of safety, what we are trying to define is very different. We are talking about the definitions of different things that are potentially detected as one of the most injury causing, or you can say that most incident happening, or there is a reason why the attention was drawn to these things. That is the reason there were some definitions, there were some specific rules and regulation made for these particular things that we are talking of. So जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम गोल्डन रूल्स होते क्या हैं, बेसिकली जब आप लोग समझना चाहते हैं इनको, तो ये वो रूल्स हैं जिनकी डेफिनेशंस बनाई गई, जिनके ऊपर बहुत गहन विचार विमर्श हुआ, लोगों ने आगे आकर इसके अंदर काफ़ी सारे कंट्रीब्यूशन किए, तब जाके ये रूल्स फॉर्म। सो फॉर मी एज एन इंडिविजुअल, मेरे लिए जो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि जिसके ऊपर काफ़ी विचार किया गया हो और जिसके ऊपर सोच समझ के कुछ इंफॉर्मेशन दी गई हों, सो वो जो हैं डेफिनेशंस जो हैं वो आती हैं गोल्डन रूल्स में। इसीलिए मैं बात करता हूँ गोल्डन रूल नंबर 3, एंड टुडेज टॉपिक इज ऑन कन्फाइंड स्पेस. So confined space, why? So confined space hazard, first you have to understand that millions of workers enter confined space on an annual basis, correct? Now, serious injuries to death in confined space can be a result of suffocation, engulfment, electric shock, falls, and heat stress. The Occupational Safety and Health Administration, that is OSHA, Occupational Safety and Health Administration, OSHA, estimates that 85% of these accidents can be prevented if proper safety precaution and job sites are initiated. करेक्ट. सो 80 ओशास क्या बोलता है कि 85% ऑफ द एक्सीडेंट्स जो कि कन्फाइंड स्पेस में होते हैं ये प्रिवेंट किए जा सकते हैं, सब्जेक्ट टू आप उसको सही ढंग से हैंडल करें. करेक्ट. नाउ, फॉर वर्क इन कन्फाइंड स्पेस मीन्स व्हाट? Means to identify the hazard present, assess the risk, and determine what precautions to be taken. Now, in most cases, the assessment will include consideration of first the task, the work environment, the working material and tools, the suitability of those carrying out the task, and arrangements for emergency rescue. Now, the Confined Space Regulation 1997 applies. These regulation contains the following key duties. क्या following duties हैं वो हम लोग बात करते हैं. To avoid avoid entry to confined space, example by doing the work from outside. If the entry to confined space is unavoidable, follow safe system of work and put in place adequate emergency arrangements before the work starts. Now, similarly, as per Indian Factories Act, confined space definition and work requirement are stated clearly in Schedule 19 under GFR Rule number 102, which says identification of all the confined spaces, the nature of hazards within such confined spaces, arrangement, development of the appropriate safeguards for health and safety of persons entering confined space. Now, establishment of permit to work, testing the presence of abnormal concentration of hazardous chemical, cleaning and neutralizing agent, and or pouring from steam or inert gases,
adequate forced ventilation system arrangements, and education and training for entry hazards involved in confined space, use of relevant PPE, emergency preparedness. So these are the things that are included in Factories Act, where it is given in Schedule 19, GFR रूल नंबर 102। अब ये जो रूल है ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करता है। ये बोलता है सबसे पहले तो आप इसको आइडेंटिफाई करिए, उसका नेचर आइडेंटिफाई करिए, और किस तरह के अरेंजमेंट चाहिएंगे उसे आइडेंटिफाई करिए। अब आइए इसको ना बेहतर ढंग से एक डेफिनेशन पार्ट से हम लोग देखते हैं, जिसे हम लोगों ने पॉइंट वाइज बताया है विद सम एग्जांपल्स। डेफिनेशन ऑफ कन्फाइंड स्पेस। सो लेट हम लोगों ने डेफिनेशन कन्फाइंड स्पेस की जो डेफिनेशन है ना उसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले आता है लिमिटेड ओपनिंग फॉर एंट्री एंड एग्जिट। सबसे पहले तो कन्फाइंड स्पेस क्या होगा, उसके अंदर होगी लिमिटेड एंट्री और एग्जिट के प्रोविजन। ओके। दूसरा जो पॉइंट है वो आता है अनफेवरेबल नेचुरल वेंटिलेशन, मतलब नेचुरल वेंटिलेशन जो है वो अनफेवरेबल इस एरिया में होगा। ओके। नाउ नॉट डिजाइंड फॉर कंटिन्यूस वर्क कर ऑक्यूपेंसी, मतलब इसका जो डिजाइन है वो इस तरह का नहीं है कि वहां पे कंटिन्यूसली आदमी काम कर सके। तो ये तीन हिस्सों में हम लोगों ने जब डेफिनेशन को डिफाइन किया तो इसको समझना पड़ेगा। तो लेट अस अंडरस्टैंड विद सम स्मॉल एग्जांपल्स आल्सो। सो confined space refers to any place including any vessel, tank, container, pit, bud, chamber, cellar, or any other similar space which by virtue of its enclosed nature creates conditions that give rise to a likelihood of an accident, harm, or injury of such a nature as to require emergency action due to, first, the presence of reasonable foreseeable presence of flammable or explosive atmosphere, harmful gases, fumes or vapors, free flowing solid or an increasing level of liquid, excess of oxygen, excessive high temperature, the lack or reasonably foreseeable lack of oxygen. Correct. Now there are some key characteristics of confined space. So what are these key characteristics? Let us quickly have a look at it. The space must be suitably enclosed. Correct. So first and foremost thing is key characteristic. How will you identify that it's a confined space? It is a suitably enclosed space. Now there must be a risk of at least one of the hazard listed above occurring within the space. That means there can be, one of the hazard. That means it can be a flammable, explosive atmosphere, harmful gases may be present, fumes or vapors will be present, you know, increasing level of liquid may be there, or excessive oxygen is there, or scarcity of oxygen is there, temperature variation is there. So any abnormal, sudden change in the atmosphere is there, correct? And the potential injury must be serious and such as to require emergency action to rescue the person involved. That means ये तीन हिस्सों में हमने इसको तीन या चार हिस्सों में हमने डिसाइड किया क्या। सबसे पहले तो ये स्पेस जो है ये सूटेबली एनक्लोज होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ रिस्क जो कि ऊपर की जो हमारी हम लोगों ने अभी जो हैजार्ड की लिस्ट करी कि भी वो फ्लेमेबल हो, हार्मफुल गैसेस हो, ऐसे मतलब कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन सडनली अगर जनरेट हो सकते ऐसा स्पेस हो, और इंजरी की जो सीवियरिटी है वो काफ़ी सीरियस हो और एनक्लोज्ड एरिया में हो और वहाँ से आदमी को रेस्क्यू करना पड़ जाए, ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो सकती हों। सो दैट इज अ कन्फाइंड स्पेस। नाउ let us take quick examples of hazards associated with confined space. So सबसे पहले आता है toxic atmosphere, correct? So what is a toxic atmosphere? A toxic atmosphere may cause various acute effects, including impairment of judgment, unconsciousness,
and death. A toxic atmosphere may occur due to the presence of hazardous substances. मतलब किसी भी फॉर्म में hazardous substances का अगर presence हो तो toxic atmosphere बन सकता है. Now these substances may be present in the confined space or various reasons for various reasons like remaining from the previous processing or storage, arising from the disturbance of sludge and other deposits, the presence of fire or flammables or flames within the space, improperly isolated adjoining plants, formation, during the work process carried out in the space, वो वहाँ से भी जनरेट हो सकता है, एंड बीइंग रिलीज फ्रॉम अंडर स्केल और ब्रिक वर्क एज अ रिजल्ट ऑफ वर्क प्रोग्रेस. सो टॉक्सिक एटमॉस्फेयर कैसे जनरेट हो सकता है? वो तो किसी भी तरह से जनरेट हो सकता है, राइट? आपने कुछ भी अगर उसके अंदर ऑलरेडी हो रहा हो, आजू बाजू में कुछ हो, या सटा हुआ कोई प्रोसेस हो, किसी के कहीं से लीक हो जाए, कुछ भी हो जाए, सडन चेंज, टॉक्सिक एटमॉस्फेयर सडन चेंज की वजह से हो सकता है, जो कि या तो केमिकल वहीं प्रेजेंट हो या आजू बाजू में प्रेजेंट हो, कहीं हमें जानकारी ना हो, हम कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिससे वो तुरंत आ जाए. करेक्ट. इसके बाद में आता है ऑक्सीजन डेफिशिएंसी. सो ऑक्सीजन can be lacking in confined space for the following reasons. सबसे पहले displacement of air by another gas. ऑक्सीजन डेफिशिएंसी कब होगी? जब वहां पे दूसरी कोई गैस का प्रमाण बढ़ जाएगा तो नेचुरली ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाएगी. Now various biological processes or chemical reactions such as rotting of organic matter, rusting of metal, burning, ये सारी चीजें जो हैं ये ऑक्सीजन डेफिशिएंसी क्रिएट करती हैं. Then absorption of air into steel surface, specifically where there are damps. करेक्ट. तो ये सारी चीजें जो हैं ये ऑक्सीजन डेफिशिएंसी क्रिएट कर सकती हैं. नाउ ऑक्सीजन एनरिच भी हो सकता है. सो व्हाट इज ऑक्सीजन एनरिच? An excess of oxygen in the presence of combustible material results in an increased risk of fire and explosion. Some materials which do not burn in air may burn vigorously or even spontaneously in an enriched oxygen atmosphere. Correct. Now, flammable or explosive atmosphere. So, a flammable atmosphere presents a risk of fire or explosion. Such an atmosphere can arise from the presence in the confined space of flammable liquids or gases, or of the suspension of combustible dust in the air. If a flammable atmosphere inside a confined space ignites, an explosion may occur, resulting in the exclusion of the hot gases and the disintegration of the structure. Now, flowing liquids or free flowing solids. So, liquids or solid can flow into the confined space, causing drooling or suffocation or burns and other injuries. Now, solids in powder form may also be disturbed, it can be present in a confined space, resulting in suffocating atmosphere. So, जब dusting हो जाता है, so it also creates a suffocating atmosphere. And finally, excessive heat. Now, the enclosed nature of confined space can increase the risk of heat, stroke, or collapse from the heat stress if the conditions are excessively hot. The risk may be, by wearing of personal protective equipments or by lack of ventilation also. So there is always there is a possibility that there is a sudden release of or sudden increase of temperature also by your work or anything activity that you are doing. So this concludes our golden rule on confined space. So thank you friends, this concludes our today's safety shot on confined space. And like I said, these are all small safety videos on small topics.
Keep liking and sharing, and do not forget to subscribe our channel. We'll keep on posting more such videos. And thank you very much, friends. Thank you.